We are live now. Hello and welcome everyone to your very own channel blinkX. I'm Aditya Thorat और आज मेरे साथ है Pranav Mer, who is the Vice President of Commodities Research at JM Financial Services. Friends, as you all know, हम लोग ने पिछली बार जो हमारे commodities के वीडियोस रहते हैं उसमें हमने कुछ नया कोशिश की थी। हम लोग ने हर एक जो कमोडिटी है, जो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज है, प्रणव ने बारीकी से उनके बारे में समझाया था, उनका चार्ट सेटअप। इतना ही नहीं, हमने उसी के साथ कोई स्ट्रैटेजीज भी आपके लिए सजेस्ट की थी। I'm very happy to say that these strategies actually turned out very well. This was a very volatile time when this happened. It was around August 5th. So yen carry trade had just, that incident had just happened. And I think we had given two strategies on crude oil itself. Both of them did very well. There was one in natural gas also, that also ended up profitable. So the main thing is this is what we try to do at blinkX. We have these experts who have years of experience with them, who come and share their analysis with us ताकि आप लोगों को इसका पूरा benefit मिल सके. So Pranav, welcome. Thank you so much for being with us today. Yeah. Thank you, Aditya. So we can go ahead with the presentation, right? Yes, I think Okay. So good evening, everyone. Today's session mostly focuses on the options part. You know how the options are traded on the the commodity options. We must have looked after the equity options. People must be trading in the equity options. So let's see how today the commodity options are getting traded. So I'll just share my screen with everyone. 1 second. So is my screen visible, right? Yeah. Yes, it's visible. Okay, thank you very much. Just a disclosure before we start this webinar. SEBI registered, SEBI certified analyst, so no issues with it. We are not doing anything no, on the wrong side. So to start with, we'll directly start with the commodity options. So before going on to the option change or the outlook or strategy, first thing that we need to understand today is the option chain. Which are the options available on commodities in the market? Which are the contract? What is the contract specification? What is the contract size? How this options are devolved and everything. So in a general sense, if we see in equities, the futures and options are both relied on the cash market, on the cash prices. But in the commodities front, we don't have any cash market. So here the options are derived from the underlying futures. So the futures जो trade हो रहे commodities के, gold के, silver के, gold mini, oil, natural gas, ये जो इसका underlying है, जो option का underlying है, वो है futures. So based on the futures price movement, we get the momentum in the options accordingly, and the trend that we follow is followed in the options as well. So what are the different commodity options that are available for us, which are good, which has good liquidity? We have gold mini, silver mini, crude mini contracts are also available for crude and natural gas. So that is also available on the options front. The lot size we have mentioned, the price quote, we have mentioned here in front of this, for your convenience. So the जो फ्यूचर का जो लॉट साइज है, सेम लॉट साइज ऑप्शंस का भी होता है क्योंकि उसका अंडरलाइन सेम होता है. देन प्रॉफिट लॉस पर टिक, यहाँ पे जब फ्यूचर्स में अगर आप गोल्ड देखोगे तो ₹1 का मूवमेंट होता है, बट इन ऑप्शन इट इज 50 पैसा. सो अकॉर्डिंगली योर प्रॉफिट लॉस पर रुपी मूवमेंट कम्स टू पर टिक इज ₹50, and the strike interval is of ₹100. Now the underlying futures for gold would be, since the futures expiries are in February, April, June, August, October and December. So the options के भी सिर्फ साल में 6 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो जिसको ये फॉलो करते हैं. Then हाँ, so and then
Similarly, we have other contracts as well for gold mini. Those are all month, यानी 12 और 12 months contracts are available. होते हैं 12 महीने के contracts होते हैं, but at a point of time only 3 to 6 contracts are active. Options में only first month is liquid, very liquid. Once it comes close to expiry, the volume, the liquidity shifts to the next month contract. Similarly, silver भी आप देखोगे तो 30 kg is the lot size, 1 kg is the price, the rate that comes on the screen is of 1 kg. Accordingly, the tick size, profit loss per rupee movement. Now, सिल्वर के साल में होते हैं 5 कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑप्शंस के भी 5 कॉन्ट्रैक्ट ही होंगे विच विल बी ऑन द अंडरलाइंग फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग. सेम थिंग फॉर सिल्वर मिनी. देन in other commodities like crude, natural gas, metals like copper and zinc, there is no bi-monthly or a five contracts in a year. Those are every month there is an expiry. So the futures are accordingly, the option contracts are accordingly designed with every month expiry in the commodities like crude, natural gas, copper and zinc. Now here one we need to keep in mind that how the options expire in commodities. So what happens on the day of expiry? So first is we need to know option कब expire होंगे. So suppose the contracts that are non-deliverable, those are cash settle contracts like crude, natural gas, जहां पे delivery नहीं होती है, ये cash settle contracts है, तो इसकी expiry is 2 trading days prior to the futures expiry. मतलब सपोज फॉर एग्जांपल क्रूड की एक्सपायरी आती है 19th ऑफ दिस मंथ सितंबर, देन योर ऑप्शन एक्सपायरी वुड बी ऑन द 17th ऑफ सितंबर in case 2 trading days prior. So in case if 17th falls on a holiday, it is 1 day prior, either 16th or 15th. Same thing for natural gas also. But in case if any the futures comes under the deliverable like gold, silver, which are compulsory delivery contracts, copper, zinc are also compulsory delivery contracts because वहां पे delivery होती है. तो options की जो expiry होती है that is 7 trading days prior to the futures expiry. Now why this 7 trading days prior to the futures expiry is because अगर आप फ्यूचर में देखोगे तो लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज में हम अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग करना बिकॉज इट इज अ कंपल्सरी डिलीवरी. देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ योर द डिलीवरी बीइंग मार्क्ड. सो 2 days प्रायर टू दैट फॉर लास्ट 5 days इज द एक्सपायरी. अब एक्सपायरी पर क्या होता है ऑप्शंस में, वॉट एवर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर इन द मनी gets automatically converted into futures. So this is the twist in commodity options कि भाई जो भी इन द मनी के ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल मैंने 6200 का कॉल बाय कर लिया है और फ्यूचर्स की एक्सपायरी 6004, फ्यूचर्स तब चल रहा है 6300, तो माय कॉन्ट्रैक्ट इज इन द मनी. सो दैट लॉन्ग कॉल जो मैंने लिया है एट एक्सपायरी अगर मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूचर्स. फ्यूचर्स में वो बाय पोजीशन खड़ी हो जाएगी एट द स्ट्राइक प्राइस दैट आई हैव बॉट एट ऑफ 6200 स्ट्राइक. So plus minus जो भी प्रॉफिट लॉस का डिफरेंस होगा that will get added to my ledger. Similarly, if I'm long put, मतलब मैंने मंदी करी है तो मेरी शॉर्ट पोजीशन खड़ी हो जाएगी फ्यूचर्स में. फॉर अ शॉर्ट कॉल अगेन मैंने इसमें मंदी करी है तो मेरी शॉर्ट पोजीशन ओपन हो जाएगी फ्यूचर्स में. एंड इफ आई एम शॉर्ट ऑन पुट, मतलब मैंने तेजी करी है तो इट विल टर्न आउट इनटू अ लॉन्ग पोजीशंस इन फ्यूचर्स. सो दिस इज हाउ द ऑप्शंस gets converted into futures on the date of expiry, after expiry. But there is an option, अगर आपको उसको convert नहीं करना है, if you don't want to, you have to give an instruction to the exchange कि I don't want to convert my position into the futures. So exchange will not do it and it will be cash settled, or it will be it may expire worthless also. बट जनरली ये कोई करता नहीं है. इफ इट इज इन द मनी, पीपल आइदर बुक इट, स्क्वायर इट ऑफ, और allow it to expiry, then it gets converted into futures. Next is what about out of the money options? So all I had one question. You just आपने just अभी mention किया
कि हम लोग लास्ट वीक में ट्रेडिंग नहीं करते क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो मार्क हो जाए, कि कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दैट टू आवर व्यूअर्स अ लिटिल मोर? सी दैट इज इन फ्यूचर्स, नॉट इन ऑप्शंस. फ्यूचर्स में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट विच आर डिलीवरेबल. So, for example, if I tell you gold, 5th of October is the expiry. So, 5 trading sessions prior to that, we should avoid trading in those futures because exchange starts randomly marking the delivery. अगर वो डिलीवरी हाँ, एक्सचेंज आपको लग जाती है, इट इज अ कंपल्सरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट. यू कैनॉट से कि भाई मैं पेनल्टी भर के छूट जाऊंगा, या और सम अदर रीजन कि तो वो मैं भूल रैंडमली गया. रैंडमली सिलेक्ट होता है। Yeah, it is done. It is a system run process, so it is not done manually. तो वो चांस है कि वो आपको डिलीवरी लग भी जाए, ना भी लग जाए. अगर डिलीवरी लग गई, यू हैव टू अच्छा सी। कंपल्सरीली टेक दैट डिलीवरी. सो दैट इज तो व्हाई वी दैट इज व्हाई अवॉइड. यू जस्ट अवॉइड, कि आपको वो चाहिए ही हाँ, नहीं, आपको उस पे वैसे भी उसमें लिक्विडिटी कम हो जाती है लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज में. बेटर टू शिफ्ट इट टू द नेक्स्ट वन बिकॉज इट इज गुड लिक्विडिटी, मोमेंटम ज्यादा अच्छा रहता है. व्हाई टू गेट स्टक इन दोज लास्ट 5 डेज. राइट राइट, ओके, थैंक यू सो मच। या वेलकम. सो out of the money ke contract, it is anyways going to get expire worthless. So this is how the settlement happens in options. In the money, all your in the money contracts get converted into futures. Out of the money will expire worthless. So this is how the devolvement mechanism happens in the in terms of options. So this is the basic part, which we need to understand when before, starting or before, going into the commodity options, whenever we are trading. And mind you, all these commodity options are of pure European call and put options with underlying futures. Now we come to the core part that we are, going to discuss, or we are, that we are going to, learn today. Somebody may be implementing it, somebody, maybe have, everybody has the different way of learning. So this is just the basic part that we are going to go, reading the option chain. ऑप्शन चेन आपको क्या दर्शाता है, व्हाट डज ऑप्शन चेन टेल्स अस कि भाई हमें क्या करना चाहिए, व्हाट डू वी हैव टू डू. नो सो generally whenever we study options, we always study option from a seller perspective. Why we study option from a seller perspective? Because seller sells the option, takes the risk, and he earns the premium on that. So what happens? So, and whenever we are studying futures options, open interest becomes the biggest study, and open interest in volume becomes the biggest study. So in options, open interest gives us an indication कि भाई what is going to happen in the market, where prices are likely to face the resistance or support. So calls with an increasing strike, calls, if calls का OI बढ़ रहा है particular strike में, what does that mean? कि भाई यहाँ पे price resistance ले रहा है, seller is selling at that particular price, many sellers are sitting at that particular price. We'll see it in the example also. So that price is likely to act as a resistance. If call OI is decreasing on a particular strike, it means कि भाई people are shifting upwards, कि price अभी और ऊपर जाने के chances है, तो the resistance is likely to get break. पुट में अगर OI बढ़ रहा है, मतलब नीचे की तरफ अगर OI बढ़ रहा है, मतलब support prices are likely to find this support around those levels, increasing support. If OI is decreasing and people are shifting lower, it means कि भाई ये support अब break करने के chances है. और दिस इज वन पार्ट. अनदर पार्ट इज कि आप पीसीआर के थ्रू देख लो. अगर व्हाट इज पीसीआर? इट इज पुट कॉल रेशियो. पुट्स डिवाइड बाय कॉल्स, उसका रेशियो आता है. अगर पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है, इट मींस कॉल्स आर गेटिंग एडेड, रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा होगा. अगर पुट कॉल रेशियो कम हो रहा है, इट इज डाउन, इट मींस पुट्स आर गेटिंग एडेड, सपोर्ट नीचे में प्राइसेस ले सकते हैं. सो हाउ डू वी फाइंड लाइकली सपोर्ट रेजिस्टेंस? और एक चीज है कि कोई कॉल जहां पे मैक्सिमम ओआई है, वो एक आपका एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, बिकॉज बहुत सारे सेलर्स वहां पर खड़े हैं. कोई पुट है जिसका मैक्सिमम ओआई है, दैट कैन बी योर लाइकली सपोर्ट लेवल, कि भाई वहां पे हम प्राइजेस सपोर्ट ले सकते हैं. और अगर प्राइजेस कंसिस्टेंटली एक रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक कर पा रहा, एक सपोर्ट नहीं ब्रेक कर रहा है, और उसी मैक्सिमम ओआई और मैक्सिमम नीचे में पुट के ओआई में खड़ा है, इट मींस प्राइसेस आर गेटिंग रेंज बाउंड. तो एक आपका ये बहुत अच्छा रेंज क्रिएट हो जाता है. आप वहां पे आप स्ट्रेटेजी बिठा सकते हो कोई.
Or what is the general rule that market follow is, if PCR is more than 1, it means put writers have, there are more put writers than call. If PCR is less than 0.5, it means more call writers have written the put. And then there are overbought and oversold region that is a bit on the higher side. So that we can discuss when we take into the example as well. Now, so this is the general option chain. We'll take the example of crude oil, which is very liquid, has good liquidity, open interest is good, volumes are going good. So this is the general page of we can say option chain which you have taken with from the exchange website, that is mcxindia.com. So इसको देख के थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई what is क्या है कहाँ पे है. So to simplify it, what I have done is we have put it in Excel. So this is, I've taken last 5 to 6 trading sessions data. अगर हम देखें crude prices, last week it was trading around somewhere around 6,400, 6,300. Today it has come down close to 5,500, 5,600 levels. So what has the OIPCR, the options data have been indicating. ये आप देख लो, मंडे का देख लीजिए डेटा. हाईएस्ट ओआई कहां पर है कॉल में? 6,500, 6,400, 6,300. उस दिन का हाई था 6,254. 6,300 पे सबसे ज्यादा ओआई है. इवन योर पीसीआर इज एट 0.38. मतलब कॉल राइटर्स आर स्टिल एक्टिव. ऊपर से प्राइस सेलिंग, उसके अगले हफ्ते से प्राइस सेलिंग प्रेशर में बनता हुआ था. तो यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज द रेजिस्टेंस जोन 6,300 का. उसके बाद क्रूड कंटिन्यूस नीचे जा रहा है. अब शाम को 4 बजे आप देखिए क्या हो गया. शाम को 4 बजे 6,300 के कॉल में ओआई था 13,000, ये बढ़ के हो गया 17,000. मतलब और रेजिस्टेंस आने लगा. फिर 6,200 का ओआई कॉल का था 8,200. दैट इज डबल्ड, ऑलमोस्ट डबल्ड टू 15,000. इट मींस कि सेलिंग प्रेशर वहां पे बहुत ज्यादा है. बट आप साथ में पुट भी उसमें देखेंगे तो 8,800 वाली पुट बढ़ के 13,000 हो गई. तो वहां पे प्राइसेस ने सपोर्ट लेने के चांसेस हैं. फिर 6,100 पे आप देखिए तो पीपल हैव स्टार्टेड एडिंग ओआई टू, दैट इज आल्सो द सपोर्ट जोन. सो उसका दिन का लो देखिए आप, क्या था 6,132. 6,100 का सपोर्ट ले लिया प्राइसेस ने वहां पे. सो दिस इज हाउ द ऑप्शन चेन हेल्प्स अस इन फाइंडिंग कि भाई कहां पे प्राइसेस जा रहे हैं. देन ट्यूसडे मॉर्निंग में क्या हो गया? व्हाट हैपेंड इन ट्यूसडे मॉर्निंग? वी हैव सीन प्राइसेस अगेन, अगर आप देखोगे तो उस दिन का हाई था 6,249 का. रेजिस्टेंस कहां पे लिया? 6,300 पे के ऊपर से. बिकॉज फिर उसके वो लेवल ब्रेक नहीं कर पाया बिकॉज हाईएस्ट ओआईज वर स्टैंडिंग ओवर देयर. देन सपोर्ट आप देखोगे तो कहां पे लिया उसने? आगे यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है पोजीशंस. अगर आप देखोगे तो ये 13,000, 10,000 वाली जो थी, ये 10,000 और 8,000 के मींस पीपल आर अनवाइंडिंग बिकॉज सेलिंग प्रेशर इज कमिंग फ्रॉम हायर साइड. देन इफ वी गो टू नेक्स्ट डे, अगेन प्राइसेस हैव कम अंडर सेलिंग प्रेशर. तो जो ये 6,200 वाली कॉल जो थी, यहाँ पे जो थे, इसका ओआई था 10,000. 6,100 का ओआई था 2,852 ऑन ट्यूसडे. अगर आप वेनसडे को मॉर्निंग में देखोगे तो 6,200 का ओआई देखिए, इट हैज गॉन अप टू 30,000. कितना एडिशन हो गया? वो 20,000 लॉट्स ऑफ एडिशन. इट मींस मोर सेलिंग प्रेशर इज कमिंग एट हायर लेवल्स. इवन 6,000 का कॉल विच वाज अराउंड 2,800 समथिंग, इट हैज गॉन टू 19,000. मतलब every higher side level is building up as prices are coming down. So this is an indication कि भाई और नीचे आते जा रहा है. OI is getting added in on the call side, resistance are getting created, and the supports are going down because people are shifting. They are shifting from their higher OI, they're on the put, adding at lower side. Then जैसे जैसे ये 6,200 में से आउट ऑफ द मनी होते जाता है तो पीपल स्टार्ट शिफ्टिंग टू 6,000. उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 5,900 पे सपोर्ट था जो ब्रेक किया. 5,288 का लो था उस दिन का. प्राइसेस केम अप टू क्लोज अबाउट 5,900.
थर्सडे को अगेन सी द शिफ्ट इन ओआई, रेजिस्टेंस इज गेटिंग क्रिएटेड एट हायर लेवल्स. जो 5900 का कॉल की ओआई थी 5555, इट हैज गॉन अप टू डबल टू 10260. सो अगेन जैसे जैसे प्राइजेस नीचे नीचे आते जा रहे, ऑप्शन सेलर्स आर कंटिन्यूअसली सेलिंग कॉल्स एट हायर लेवल्स टू अर्न द प्रीमियम. देन इवनिंग इटसेल्फ इट वेंट अप टू 16,000. सो अनदर इंडिकेशन कि भाई प्राइस अभी भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, कॉल्स में ओआई ऐड होते जा रहा है. नीचे में पुट्स भी सपोर्ट्स पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स लोअर साइड. फ्राइडे व्हाट हैपेंड अगेन, 5900 में आप देखिए 14,900 का ओआई मॉर्निंग में था, इवनिंग में इट रोज टू 18,000. रेजिस्टेंस अगेन, रेजिस्टेंस हैज बीन क्रिएटेड ऑन द हायर साइड. पुट में पीपल आर शिफ्टिंग लोअर. जो 5,900 में 10,000 का 800 का ओआई था, वो शिफ्ट होके 10,600 का नीचे में शिफ्ट हो रहे पीपल. इवन 5,900 कॉल पीपल आर राइटिंग एट 11,000. देन व्हाट हैपेंड यस्टरडे, prices अभी भी सेलिंग प्रेशर में, इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन एवरीवेयर. इफ यू सी कॉल राइटर्स हैव बीन एग्रेसिव कंपेयर्ड टू द पुट राइटर्स का ओआई बहुत कम है. कॉल राइटर्स हैव बीन कंटिन्यूअसली सेलिंग एट हायर साइड. So 5,800 again is the resistance which prices faced yesterday. It has been continuously going down. फिर इंट्राडे में वो रेजिस्टेंस बढ़ के 22,700 हो गया अराउंड 4 o'clock, 4:15. सो दिस इज एन इंडिकेशन कि भाई प्राइस अभी भी सेलिंग प्रेशर में है. कॉल राइटर्स हैव बीन एग्रेसिवली सेलिंग एट एवरी स्ट्राइक एज द प्राइसेस आर कमिंग डाउन. दिस इज टुडे मॉर्निंग्स. आप देखोगे तो 5,700 का ओआई में कितना बढ़ गया yesterday closing पे. This is yesterday's closing. It is 18,648. It means that is likely to act as a very strong resistance in today's trading session. Puts अगर आप देखोगे तो 5,500 के पुट 8,899 से घट के it went down to it rose to 9,734. It has again come down to 8,233. Means people are shifting on the downside. So whatever we explained, we saw. आप चार्ट पे देख सकते हैं, it has been a continuous selling from since last week from around 6,300 level, 6,300, 350. Prices have come down to 5,550 levels in till today's trading session. So this is how we can read the option chain, and if we correlate it with the charts also, it can helps us in getting the view of the market, how कि भाई market में क्या हो रहा है, क्या sense चल रहा है. So call writers have been aggressively selling in crude, and we've seen it into the price, reflecting into the prices as well. Now अब क्योंकि oil market is very it's a very bear market, the momentum is continuously on the negative side. What are the different strategies that we can use in a bear market to get some profitable strategies, or we can say to take a risk? So there are there are more strategies, but we have highlighted just 1 leg and 2 leg strategies over here. So what is a first is the one plain vanilla strategy. आप futures sell कर दो और साथ में put buy कर लो. That is a very safe strategy. Or we can say only buy a put and hold with a stop loss and a defined target on the downside. So this is one strategy you can use. Another is covered put. What do we mean by covered put? आप futures sell कर दो and साथ में put भी sell कर दो. So अगर आपने जब futures sell किया है और आपने put जब sell किया, उसका premium, you will get the premium. So till that premium turns zero, you are on the profitable side. As the futures come down, put का premium तो zero, साथ में अगर बढ़ते जाता है तो यू आर हेज्ड अगेंस्ट दिस. बट व्हाट इफ इट रिवर्सेस? अगर ये रिवर्स होता है तो यहाँ पे आपका रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है, बिकॉज यू हैव सोल्ड द पुट एंड यू हैव सोल्ड द फ्यूचर्स एज वेल. सो योर रिवॉर्ड इज लिमिटेड इन कवर्ड पुट एंड योर रिस्क इज अनलिमिटेड. सो व्हाट अनदर स्ट्रेटेजी दैट वी कैन डू इज सिंथेटिक लॉन्ग. आप फ्यूचर्स सेल कर दो, साथ में आप एक एट द मनी का या क्लोज टू द मनी का कॉल बाय कर लो. सो हियर योर रिस्क इज लिमिटेड इन केस
of adverse move or if prices starts moving against our view, so and the reward remains unlimited. और एक चीज कर सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल, अगर प्राइस वोलाटिलिटी ज्यादा है, we are expecting a one way move, we can buy a call and a put of a string same strike price. Long strangle कर सकते हैं, we can buy a call at a higher strike price, put at a lower strike price. Here the risk is limited to the premium that we pay, reward is remains unlimited. So these are a few strategies that we can use in a bear market, but since prices have already come down, wait for a clarity जहां से रिवर्सल होगा. At this particular price, we going for a straddle or a strangle, we don't advise. Yes, one can go by selling futures and hedging it with a call. That could be the ideal strategy that one can do. Now we will look at one more commodity, that is natural gas. अब आप नेचुरल गैस का चार्ट सेटअप देखिए. व्हाट द नेचुरल गैस चार्ट सेटअप इज इंडिकेटिंग अस. दिस इज द वीकली चार्ट. तो अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग वीक्स, मतलब नियरली 2 months प्राइजेस आर स्टक इन अ रेंज, कहीं नहीं जा रहे. ऊपर में 192, नीचे में 160, थोड़ा ब्रेकआउट आता है बट इट इज बीन अनेबल टू सस्टेन. सो व्हाट is this strategy, what this chart is dipping out कि भाई prices are in a consolidation mode. So what we can do, looking at the chart, combining it with the option chain. अगर आप देखोगे options में OI कहां पर है, कॉल का 190 में 7,948 हाईएस्ट OI है. देन 6,987 इज द OI. 200 में है 7,658. तो आपका हाईएस्ट OI इज एट 190 विच इज द रेजिस्टेंस जहां पे कॉल सेलर खड़ा है. पुट में अगर आप देखोगे तो 10,084 का OI है एट 180, 8,118 का OI है एट 170. तो मिल गई हमें रेंज एक. 190 क्रॉस नहीं कर पा रहा, हाईएस्ट कॉल राइटर आर सिटिंग देयर. नीचे में 180 बिकॉज प्राइजेस, दिस इज टुडे मॉर्निंग का, सो प्राइजेस हैव कम ट्रेडिंग अराउंड क्लोज अराउंड 188. सो यहाँ पे OI ज्यादा दिख रहा है. सो अगर ये करेक्शन भी होता है तो 180 पे पहला सपोर्ट ले सकता है. नेक्स्ट सपोर्ट कुड बी अराउंड 170. बट मोटा मोटी अगर आप देखो तो प्राइसेस आर जस्ट स्टक बिटवीन 190 टू 170 ओवर द पास्ट 2 to 3 ट्रेडिंग वीक्स. और लास्ट 8 ट्रेडिंग वीक्स का अगर आप देखते हैं रेंज, तो 160 से 190 का रेंज है. सो यहाँ पे हम एक कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं? दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट वी कैन यूज. We can trade iron butterfly since there are just 9 trading sessions to expiry. What we can do is, because 190.95 is the resistance, we buy out of the money 195 का कॉल. सामने हम 180 का कॉल सेल करेंगे और 180 का पुट सेल करेंगे. ये लाइव प्राइस नहीं है, दिस इज यस्टरडेज प्राइस, सो डोंट कंसिडर दिस एज अ लाइव प्राइस. और साथ में हम 165 का पुट भी बाय कर लेंगे. सो net we get nearly 10 rupees. If we multiply it with the price, it comes to around 12,430 rupees. So the maximum profit is 12,430 gross and maximum loss would be 6,300. What will be the profitable range as per this? Between 170. अगर ये नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट 170 और 190 के बीच में अगर एक्सपायर हो जाता है इन दिस एक्सपायरी, we can get maximum up to 12,400 gross, not net, gross. And if it profit could be between anywhere between 60-100 rupees to 12,400. Even if it expires outside our range, maximum loss that we incur would be around 6,300. So this is what the strategy that we can deploy. And in natural gas, so based on the price momentum, looking at the charts, looking at the options chain, how it has been indicating. Next we'll move to silver. We'll look at one more chart. अब हमने जब प्रीवियस सेशंस जब हम किए थे, हम टेक्निकल का हमने जब सेशन किया था, we had said that whenever of prices falls in between its long term moving average, it goes into a consolidation range. एक sideways का रेंज हो जाता है. तो आप देखोगे the red line is the 200
100-day moving average, blue is the 100-day moving average, and green is the 200-day moving average. और एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो 50-day moving average has crossed the 100-day moving average from down. तो मतलब अपसाइड तो अब लिमिटेड हो गया सिल्वर में. नीचे में प्राइसेस आर टेकिंग सपोर्ट अराउंड 200-day moving average as we have seen in the month of August, beginning month of August, and upside it has been unable to sustain above 200-day. तो हमें एक रेंज पता चल गई कि भाई नीचे में सिल्वर 80,000 का सपोर्ट ले सकता है, ऊपर में 87,000 का रेजिस्टेंस ले सकता है. इसी बीच में हमें लग रहा है कि ये क्रूड और कुछ दिनों तक ट्रेड करता रहेगा. सो वी कैन डिराइव अ स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन दिस चार्ट पैटर्न कि भाई मार्केट इज इन अ कंसोलिडेशन रेंज. तो जब तक इस रेंज में है वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ एनी ऑप्शन स्ट्रेटजी दैट वी कैन डिराइव. सो व्हाट स्ट्रेटजी वी हैव यूज्ड? We have taken the example of silver mini. Current price yesterday's closing trading, it was evening trading around 83,500. So what I have done is I have bought out of the money ka call 87,000 ka, sold 84,000 ka call, and sold 83,000 ka put, and I have bought 80,000 ka put as well to hedge myself. So here the premium that I have earned is 11,495 because the multiple for silver mini is 5. Now, this strategy is called an iron condor. So maximum profit अगर इसी एक्सपायरी में अगर एक्सपायरी तक इसी रेंज में सिल्वर मिनी रह गया, that is the November expiry, then my maximum profit would be 11,490. Maximum loss would be 3,500. So a very good strategy that we can deploy. If prices stays within this expiry range, our profitable range would be between 87,000 to 86,000. 80,000 to 86. अगर इस रेंज में एक्सपायर हो गया, सॉरी इट इज वुड बी 81,000. 81,000 टू 86,000. सो अगर इस एक्सपायरी में इसी रेंज में एक्सपायर हो गया, देन द स्ट्रेटजी वुड बी इन प्रॉफिट. Maximum loss that could be would be around 3,500. So this is one strategy that we can deploy when market goes sideways, like iron condor that we can use in silver, or in natural gas that we have used the butterfly strategy that we can utilize and we can earn profits. So जैसे जैसे ये contracts expiry के करीब आएंगे, the premiums will start melting down. You will even start getting the profits too as it moves towards the expiry. तो अगर आपको लग रहा है कि भाई टुवर्ड्स द एक्सपायरी वोलाटिलिटी इंक्रीज होने वाली है, वी कैन एग्जिट इफ यू आर गेटिंग सफिशिएंट इनफ प्रॉफिट्स आल्सो, एक्सक्लूडिंग आफ्टर कटिंग द कॉस्ट्स एंड एवरीथिंग. So here just a highlight on gold, because everybody wants to know भाई gold में क्या हो रहा है, what is happening in gold. So trend we can say in gold still remains very much on the positive side. 72,000 was yesterday's price. The underlying trend remains very much positive. 70,800 is the strong support in gold. जब तक ये 70,800 ब्रेक नहीं करता, नीचे आना मुश्किल दिख रहा है. ट्रेंड लुक्स पॉजिटिव. अपसाइड प्राइसेस आर फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड 72,250 300 लेवल. अगर आप देखोगे दिस इज द वीकली चार्ट, तो लास्ट 4 हफ्ता इंक्लूडिंग दिस वीक कहीं नहीं जा रहा है, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है. अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ गया, वी कुड सी प्राइसेस रैलिंग टुवर्ड्स 73,500 लेवल्स आल्सो. So this is all from my side, on the options front, on how we can use the commodity options, the option chain, how we can use to identify what has been the trend, what has been the sentiment in the market using the open interest in the call side as well as on the put side. And based on those sentiments, we can club it with the charts, to get the second confirmation, and we can derive a strategy and trade. So I'll open this forum for Q&A. If you have any questions, any queries, you can ask. Thanks, Pranav. I mean, first, before I take questions, I would only like to say that the webinar was there was so much detail, especially taking every day's open interest for crude and all. व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हम ब्लिंकएक्स में कोशिश कर रहे हैं कि इतने जो लोग नए मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक बहुत ही अच्छी बारीकी से टीचिंग मिले, ताकि आप आप अच्छे डिसीजंस ले सको अपने ट्रेडिंग जर्नी में. एंड
तेजस, वन मोर थिंग, आपने जो गोल्ड का अभी बताया, अपने प्रीवियस वेबिनार में भी आपने यही इंडिकेट किया था कि वो फॉल होने के बाद इमीडिएट रैली नहीं करेगा, वो एक कुछ दिन रेंज में चलेगा। सो Yeah. आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू डू इट, जो आपने बताया, जो आप Yes. ऑप्शन चेन देखते हो, सेंटिमेंट एनालाइज करते हो, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू कैन मेक अ प्रिडिक्शन. सो दैट इज ग्रेट, ऑनेस्टली. थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई विल टेक सम क्वेश्चंस हियर. So we have a question कि how can we minimize or avoid loss in commodity options trade? See, there is in minimizing, you can do a hedge trade. For example, if I say कि भाई I'm bearish, मेरे को crude positive लग रहा है, so what I can do is I can buy abhi current price is around 5,700, so I can buy a 5,700 call, and on the higher side I can sell the 5,800 call. So 5,700 का call का अगर option premium चल रहा है somewhere around, for example, if I say 60 रुपीज, और 800 का ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है सम 20 रुपीज, तो मैं 60 और 20 में सेल कर दूंगा, तो माई फिक्स्ड प्रॉफिट इज 40 रुपीज इफ द स्ट्रेटेजी गोज वेल, एंड इफ इट गोज एक्सटेंडिंग, तो 5,800 का जो मैंने सेल किया है वो जीरो हो जाएगा, और 700 का जो ओपन है इट विल स्टार्ट मेकिंग अनलिमिटेड प्रॉफिट. सो बाय हेजिंग यू कैन डू इट विद स्ट्रेटेजी. आप 2 लाख स्ट्रेटेजी में यूज करके आप उसको ट्रेड कर सकते हैं. Okay, और यू कैन डू इट लाइक अ 4 लाख स्ट्रेटेजी दैट वी सेड कि भाई मेरे को मेरा लॉस भी डिफाइंड है, प्रॉफिट भी डिफाइंड है, आई डोंट वांट टू टेक अ बिगर रिस्क, लाइक वी डिड इट इन सिल्वर, मिनी एंड नेचुरल गैस, दैट यू कैन डू इट. right. There's some positive comments about. I remember the crude analysis from last time. Spot on, sir. There's one more which is saying कि all the hedging strategies have a very good risk reward. Um, then okay, we have one question. मिनी और मेगा में फर्क क्या है? If I example, if you take a gold mega is 1 kg, gold mini is 100 ग्राम. जो स्क्रीन पर आप प्राइस देखते हो गोल्ड मेगा और मिनी के, दैट इज ऑफ पर 10 ग्राम. सो योर प्रॉफिट लॉस वेरीज इन गोल्ड मेगा. योर प्रॉफिट लॉस पर 1 rupee मूवमेंट कम्स टू 100 rupees. In mini it comes to just 10 rupees. So that is the basic difference. Okay, it's like a smaller and bigger lot Yes, size. yes, yes. Smaller and bigger contracts, so designed for every category of investors. Even retail, even HNIs can trade and participate. Okay, understood. एक क्वेश्चन है. व्हाट डू यू अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया ऑप्शन चेन. तो ऑप्शन चेन फॉर कमोडिटीज एंड इक्विटीज, मतलब उसमें रीडिंग में कुछ फर्क नहीं है? इट इज No, प्रीटी. no, no, no. The basic fundamental remains the same for any option chain if you see. So there is no change कि भाई equity में there is some speciality और commodity में there is some different specialty. Only thing is कि commodity में आपको एक difference है कि भाई expiry पे ये futures में convert हो जाती है positions. That is ओके. only difference. Otherwise, the basic thing remains the same. Even the charts अगर आप जो भी देखते हो, चार्ट को एनालाइज करने का जो तरीका होता है वो सेम होता है, सबका अपना अपना अलग से होता है, बट द बेसिक फंडामेंटल रिमेन्स द सेम. ओनली दिस आर द डिफरेंट स्क्रिप्ट्स. इक्विटी है, ये कमोडिटी है. ओके. कपल मोर क्वेश्चंस. ग्रोस पे ऑफ मींस नॉट इंक्लूडिंग ब्रोकरेज. हाँ, हमारे जो चार्ट्स में आपने जो पे ऑफ बताया, यू सेड ग्रोस पे ऑफ, That नॉट is नेट gross पे ऑफ. payoff. So that does not include brokerage, other charges, exchange charges, turnover charges. So the profit what I've shown you is gross. उसमें से आप अपना ब्रोकरेज, आपके जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं उसको आप डिडक्ट करोगे, फिर आपको नेट मिलेगा. Okay, so that was the question. So basically, it's just not including brokerage and other No, charges. no, 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 no. It is just the gross payoff. Okay, we're getting requests ki can we have more of the strategies in the next webinar? Yeah, we can try. If market gives us a सेटअप good बनेगा opportunity, तो we सेटअप can. बनेगा तो स्ट्रैटेजी बनेगी. Yeah. Okay, wonderful. I think that's all the questions we have for now, Pranav. So, viewers, if you all have more questions or if we missed out on any, you all can always reach out to us on social media. आप हमारे Twitter, Instagram पे questions पूछ सकते हैं और हम ये questions सीधा expert से ही आपको answer कराएंगे. Also, हमारे साथ बने रहिए. Subscribe, like, and follow our content on all our social media channels so that we can keep bringing such quality content for you. And we have some very interesting things planned.
So stay tuned. Thank you so much, viewers. Thank you, Pranav. Yeah. Thank you, everyone. Thank you, Aditya.